रिफ्रैक्शन पे जंप मारते हैं. ओके देन और मिरर के डायग्राम्स वगैरह बीच में एक बार मैं लास्ट क्लास में करवा दूंगा फटाफट सारे. ओके पहले सीधे रिफ्रैक्शन पे जंप मारो बिकॉज रिफ्रैक्शन आपके लिए नया है. ओके रे डायग्राम्स आते हैं तुम लोगों को? हाँ सर एक बार उसके वो बता देना, एक बार रफ बना देना. ओके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक क्या होता है रिफ्रैक्शन में? देन द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम is called as refraction of light. Suppose this is the interface of two media. What is meant by interface of two media? Then where the two media meet with each other, that is called the interface of two media. So this is the interface of two media. Suppose a ray of light is coming this way and it strikes at this point. Okay, then after striking at this point, then as the medium changes, suppose upper medium is rarer and this medium is denser, then the direction of the light will change. Instead of going in this straight line, okay, the ray of light bends and goes in this direction. Okay, so this phenomenon of bending of light when it passes from one medium to another medium is called as refraction of light. This angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence, and this angle between the refracted ray and the normal is called as the angle of refraction. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पर दो एंगल मिलेंगे आपको. लेकिन क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है, ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती है. फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई चीज मैटर नहीं करती है, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल द थ्री ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन. यहाँ पर भी क्या होता है, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, लेकिन बाकी सब चीजें मैटर करती है. फॉर एग्जांपल व्हेन द रे विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द direction will change, but this time it will go away from the normal. Instead of going straight, it will go in this direction. So क्या होता है यहाँ पर कि जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर, बट व्हेन इट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बी अपोजिट. ओके, दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगा तो उस वक्त में यहाँ पर तीन चीजें बदल जाती हैं. ओके, कौन कौन सी तीन चीजें बदलती हैं? द स्पीड ऑफ लाइट, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन. ये तीन चीजें बदल जाती है. ओके, देन ये तीन चीजें बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह जाती है. ओके, देन तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है v इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा. ओके, अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो. अगर हमने इसको यहाँ से इग्नोर कर दिया तो हमको पता चलेगा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वेवलेंथ कम रहेगी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी. इस तरीके का इसका यहाँ पर प्रिंसिपल होता है. Okay, then so when the light goes from one medium to another medium, it bends because the speed changes. Speed changes because the wavelength changes. Okay, then and wavelength and speed changes because of that the direction changes over here. Okay, then लेकिन ये जो bending होती है ये ऐसे ही randomly नहीं होती है, haphazardly नहीं होती है. यहाँ पर क्या होता है, it obeys certain laws which are called the laws of refraction. Okay, the first law of refraction says that the incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. Okay, and the second law says that the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, okay, is a constant. Okay, is a constant. Okay, for a given pair of media, is a constant for given pair of media. मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो दो मीडियम का कॉम्बिनेशन होता है, ओके, उनके लिए, ओके, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है ये कांस्टेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज जो लाइट है वो मैं यहाँ पर एयर टू लूंगा, एयर टू वाटर जाता है. इफ द लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर तो इसमें क्या हो जाएगा कि दिस साइन आई अपॉन साइन आर जो है तो दिस विल कम फिक्स्ड 1.33. ओके, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी रहे, हर बार साइन आई अपॉन साइन आर जो है तो वो 1.33 आएगा. रिमेंबर फॉर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई एम टॉकिंग. देन सो इट विल बी 1.33. देन ये कांस्टेंट हो गया. किसके लिए कांस्टेंट हो गया? एयर टू वाटर. हर एक एंगल के लिए, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम आंसर आएगा. ओके, सिमिलरली अगर सपोज रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास तो ऐसी कंडीशन में उसका आंसर क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.5.
ओके फिक्स है 1.5, ओके केरोसिन के लिए 1.6, डायमंड के लिए 2.42, ओके इस तरीके से क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके देन नेक्स्ट थिंग ये हो गया उसका सेकंड लॉ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट आता है हमारा, ओके देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, देन इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। ओके ये जो लॉ होता है स्नेल का ये दो कंडीशंस में फेल हो जाता है। ओके कौन से दो कंडीशंस होते हैं? वो पहली कंडीशन होती है इसकी यहाँ पर कि ये जो लॉ है तो वो देन see Sir, when the mediums are same. एक मिनट रुक जा बेटा, मैं शायद कुछ काम भूल गया हूँ इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, शायद कुछ भी इम्पोर्टेंट काम मैं भूला हूँ, एक मिनट। सी स्नेल्स लॉ, लेकिन क्या होता है ये लॉ फेल हो जाता है। ओके दिस लॉ fails when the light is incident normally, when the light is incident normally ओके मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मली, ओके अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा कि नाउ इट विल बिकम इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसे? साइन 0 अपॉन साइन 0, 0 अपॉन 0 एंड 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके और दूसरा क्या होता है? द लॉ अगेन फेल्स इफ सपोज टू मीडियम हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए क्या होगा? अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहा तो लाइट बेंड होगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा। ओके मतलब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। ओके तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक बार फिर से लॉ फेल हो जाएगा। ओके देन नेक्स्ट, ओके तो एक मिनट ना बेटा, मुझे शायद कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया मैंने इधर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं, मुझे कुछ अपडेट करना था, मैंने शायद नहीं किया। ओके जस्ट वेट, क्या इस टर्म एक्चुअली एग्जाम है okay? और मुझे बच्चों को आईडी भेजना था, मैंने वो भेजा नहीं हूँ, मुझे एक बार चेक कर लेने दो कि मैंने इससे पहले जो आईडी उनको भेजा था वो यही था या नहीं था। ओके जस्ट अ मिनट बेटा, गिव मी अ मिनट, हो जाएगा फट से। बेटा आईडी राशि जस्ट अ मिनट बेटा, और 7 अक्टूबर then now I have a lot of work to do. Okay then चलो फटाफट करते हैं इसको बेटा खत्म। then see it came at 7 fine बेटा चलो। Now see, so you got this sin I upon sin r is equal to a constant. Okay, then and
it is the Snell's law which fails when the light travels in the normally or when it travels when the refractive index of the two medium is same. Okay, इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर? Then after this we have this one. See this one. See ये जो कांस्टेंट होता है, ओके, साइन आई अपॉन साइन आर, ओके, तो इसको बोलते हैं हम n21. What is meant by n21? Here this n21 stands for refractive index of second medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium, okay, with respect to first medium. With respect to the first medium, okay, then हमेशा याद रखना ये क्या होता है, n21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, then next अभी यहाँ पर क्या होता है कि see अगर सपोज हमने यहाँ पर निकाला ये n21, तो ये जो सेम n21 होता है, ओके, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो. ओके, तो हमारे पास में जो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 के लिए पहला फार्मूला क्या आया था, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. ओके, तो दूसरा फार्मूला क्या रहेगा, तो सेकंड फार्मूला विल बी इक्वल टू सी कम्स इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 अपॉन v2. ओके, देन v1 अपॉन v2. अभी हमको कुछ सोचना नहीं है, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उसको लिखते जाना है. अब होता क्या है कि जो आपका v होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो v1 इज इक्वल टू कितना होगा, न्यू इनटू लैम्डा 1, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो उस हिसाब से आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आएगा न्यू टू 1 कितना हो जाएगा, वो न्यू इनटू लैम्डा 1 अपॉन न्यू इनटू लैम्डा 2, सो इट विल बिकम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. इस तरीके से क्या होता है, और एक और का फार्मूला था n21 इज इक्वल टू दिस रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ. ओके, अभी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होती क्या चीज है, ओके, तो सी यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली सपोज हमने यहाँ पे ग्लास लिया, ग्लास में पानी रखा और पानी रखने के बाद में इसके बीच नीचे एक यहाँ पर कॉइन रख दिया नीचे की तरफ. ओके, यहाँ पे पानी भर के रखा है, तो क्या होता है, सपोज ये जो कॉइन है इसके ऊपर एक पॉइंट है O, इस पॉइंट O से दो रेज इस तरीके से ट्रैवल करते हैं. ओके, दे आर गोइंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अब आपको पता है कि इफ द रेयर्स ऑफ लाइट आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये रे इधर जाएगी और ये रे इधर जाएगी. Okay, then because they will bend away from the normal. लेकिन क्या होता है कि when these two rays are retraced backward, they appear to meet at this point, and this point O will appear at this point O dash. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेप्थ होती है इसको बोलते हैं हम अपरेंट डेप्थ, और ये जो डेप्थ होती है इसको बोलते हैं रियल डेप्थ. तो इसलिए क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. इसलिए कि क्या होता है कि होता क्या एक्चुअली कि यहाँ पर क्या होता है, ये पर्टिकुलर केस के अंदर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो इस वजह से क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, द फार्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, n21 इज इक्वल टू c अपॉन v. क्या है वो, c अपॉन v. और यहाँ पर क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वेलोसिटी. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. तो होता क्या एक्चुअली, सी आपको याद कैसे रखना है इसको, क्या होता है, c is the speed of light in vacuum which is the highest possible speed. c is the speed of light in the vacuum which is the highest possible speed. Okay, and v is the speed of light in medium which is less. So a big number divided by small number will always be, okay, क्या हो जाएगा, it will be greater than 1. It will be greater than 1. Now look at this. If you look at this, you can easily guess. Okay, real depth is bigger than the apparent depth. That's why the formula should be real depth upon apparent depth. No confusion. Real depth upon apparent depth, and there will be no confusion. Okay. Then next thing. Just a minute, beta. Just a minute, there are so many things coming now. Okay, I will have to check everything.
happens one day before the examination, then there are so many updates. Okay, and we have to go through all. ओके बेटा, चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्नॉलेज द मैसेज. ओके, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, सी, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे फार्मूलाज आ जाते हैं. देन वी गेट अनदर फार्मूला. सी क्या होता है कि देन वी दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल केस. सो हियर वी गॉट थ्री फार्मूलाज टिल नाउ. Okay, what is that? That is sin I upon sin R is equal to V1 upon V2 is equals to then the wavelength of light in the first medium divided by wavelength of light in second medium, then real depth divided by apparent depth. इतने formulas हमको इसमें चुके हैं. इसके बाद में आता है absolute refractive index. Okay, see absolute refractive index actually क्या होता है कि हमको आदत पड़ चुकी है कि हमको हर चीज को किसी न किसी चीज से कंपेयर करना होता है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि we compare the refractive index of a medium or the speed of light in a medium with the speed of light in vacuum. तो जो refractive index आता है उसको बोलते हैं absolute refractive. So यहाँ पर absolute refractive index क्या होगा? The refractive index of a medium. The refractive index of a medium, then with respect to vacuum, with respect to vacuum, respect to vacuum or air. Okay, vacuum or air is called as absolute refractive index. Absolute refractive index. Okay, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Only n medium. क्या होता है वो? n medium is equal to c upon v medium. यहाँ पर c क्या है? c है the speed of light in the vacuum and v medium is the speed of light in vacuum. Okay, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो c is greater than v. In all cases c is greater than v. That's what will happen. This will always be greater than 1. ये क्वेश्चन आ सकता है. Why the absolute refractive index is always greater than 1? It is always greater than 1 because it is the ratio of the speed of light in vacuum. Statement in three different ways. जैसे आप एक तो ये लिख सकते हो कि the absolute refractive index of glass is 1.5, which means that the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in glass is 1.5. Or you can write that the speed of light in vacuum is 1.5 times the speed of light in glass. ये भी लिख सकते हो. इसको बराबर लिखना पड़ेगा आपको. The speed of light in vacuum is equal to 1.5 times the speed of light in glass. Or you write that the speed of light in glass is 1 upon 1.5 times the speed of light in vacuum. Okay, इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो. Okay, हाँ. परसेंटेज कैसे निकालेंगे अगर बोला कि हाउ मच परसेंटेज डज इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? नहीं, परसेंटेज निकाल सकते हैं. देन सी क्या होता है यहाँ पर कि नहीं, आज सर ने दिया था तो मैं को समझा ही नहीं कुछ. परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मतलब वो बोले कि बाय हाउ मच परसेंट विल इट बेंड, तो वो कुछ तो चीज भी का था. एक मिनट रुक जा बेटा. ओके, एक्चुअली क्या रहता है अभिषेक, अभी तुझे देख सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 है. तुझे sin 20 और sin 15 मालूम है? नहीं. कैसे करेगा? अगर 45 और 30 दिया तो ऐसे कैसे रहेगा? वो एंगल आना चाहिए ना. अच्छा, ओके. वो एंगल आना चाहिए. जो क्वेश्चन सर ने दिया था वो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूं, फिर मैं बताता हूँ. वो तो मेरे पास नहीं, मैं पूछ के बताता एक से क्वेश्चन देता. ओके, क्वेश्चन पता चल जाए तो हम उसका कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं. मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर. ओके, तो हम उसका कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा? फिर नहीं होगा. नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर
अरे यार इधर इतने ज्यादा अपडेट्स आने लग गए इधर कि आंसरिंग मुश्किल होती जा रही है। ओके एक मिनट बेटा, कल का ड्यूटी है 9th सिलेक्शन ड्यूटी 7th अक्टूबर। मेरा नाम चल ठीक है देख लेगा बेटा, मैं तरफ से उसको पता नहीं क्या है। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन। यहाँ पर क्या होता है कि दिस सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके देन अगर हमने n2 को n1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? ओके डिवाइड करो, n2 divided by n1 is equal to c upon v2 divided by c upon v1। इसका बराबर रेसिप्रोकल लो तो n2 upon n1 is equal to आता है आपका v1 upon v2। मगर आपको पता है कि v1 upon v2 तो n21 होता है। v1 upon v2 क्या होता है? n21। तो यहाँ पर आपको n21 के दो फार्मूलाज मिल गए। कौन कौन से दो फार्मूलाज मिल गए आपको? n21 is equals to v1 upon v2 is equals to n2 upon n1। n2 upon n1। सी अभी आपको क्या याद रखना है? ओके देन सी जब आप स्कूल में एग्जाम के लिए जाएंगे तो दैट टाइम यू विल फॉरगेट एवरीथिंग जो भी मैंने अभी बताया हूँ। ओके और सिर्फ इतना याद रखना है बिकॉज सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी पे आने वाले हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आने वाले हैं। तो इसलिए क्या होगा कि सिर्फ इतना ही फार्मूला याद रखना है आपको। अगर आपको इतना फार्मूला याद है और आपको v इज इक्वल टू c अपॉन v याद है, सॉरी दिस n इज इक्वल टू c अपॉन v याद है, तो पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला जो न्यूमेरिकल है वो इसी के ऊपर आने वाला है। ओके देन नेक्स्ट इसके बाद में और क्या होता है? दिस नेक्स्ट है हमारा क्या बोलते हैं इसको हम जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म होने के बाद में क्या आता है यहाँ पर हमारा आता है रिफ्रैक्शन टू द लेंसेस। ओके तो लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है? पहले क्या होता है कि देन एक लेंस जो होता है तो द लेंस इज द पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स। ओके लेंस अगर दो स्फीयर का पार्ट है तो उसमें क्या होगा कि देन ओके इट विल हैव टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, टू रेडाई ऑफ कर्वेचर। ओके देन यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये हमारा लेंस है। ओके व्हाट्सएप करा था वो दिख रहा था वो पेन पकड़ा हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर है। ये है हमारा यहाँ पर f1, ये है हमारा यहाँ पर 2f1, ये है हमारा यहाँ पर f2, ये है 2f2। ओके तो होता क्या है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ओके और वो जो रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो क्या होते हैं पहले क्या होता है? ओके देन सो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स है वो इस तरीके से रहते हैं कि सी होता क्या है कि the ray which comes parallel to the principal axis, the ray which comes parallel to the principal axis, then that ray passes through the optical center, sorry through the focus on the other side। suppose ये ray ऐसे यहाँ पर parallel to principal axis आ जाए तो this ray will pass through this line, this way। okay then next अगर suppose यहाँ पर कोई ray है then okay and if suppose that ray comes okay that ray comes okay through the optical center तो क्या होगा वो that ray will go without any deviation। ये second rule है। और third rule says that if a ray comes okay through the focus on the left side then it will go parallel to the principal axis after the diffraction। ओके इस तरीके से यहाँ पर तीन रूल होते हैं, जिन तीन रूल्स को फॉलो करके हमको यहाँ पर सारे इमेजेस का ये बनाना है, सारे इमेज फॉर्मेशन बताना है। ओके तो यहाँ पर क्या होता है कि देन मैं आपको सारे इमेज फॉर्मेशन एक एक करके फटाफट बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखो इसके ऊपर क्या होता है। ओके देन इमेजेस कैसे आते हैं और उनका नेचर भी क्या रहता है। तो
सबसे पहले क्या होता है कि इसी में छोटा डायग्राम बनाता हूँ ताकि हम पूरे डायग्राम को एक साथ में स्टडी करके समझ सके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। सो इंफिनिटी when the object is at infinity, तो इसी केस में क्या होता है, when the object is at infinity all the rays will come parallel to the principal axis and the rule says that all these rays will meet or they will pass through the focus on the other side, so one ray will go this way, the second ray will go this way, और इस तरीके से क्या होगा, all the rays will meet at this point, okay, और इस तरीके से यहाँ पर real inverted और enlarged image बन जाएगी, okay, real inverted और enlarged image बन जाएगी, okay, then next इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, दिस ओके, सर रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बन जाएगी। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही अपडेट्स आ रहे हैं, मुझे भी वो सारे अपडेट्स फॉरवर्ड करने थे, बट अब अपना क्लास चल रहा है, ओके चलो हम फटाफट खत्म करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका पहला केस, when the object is at infinity the image will be real inverted and point size at focus, ओके। सेकंड केस में क्या होता है कि सपोज ये आपका देन ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, देन और ये फोकस f1 है, ये फोकस f2 है, देन ये फोकस सॉरी ये 2f1 है, ओके, ये आपका फोकस f2 है, ओके, और इसके आगे आपका क्या है यहाँ पर, देन ये आपका 2f2 है। तो if the object is just beyond 2f1, okay, तो क्या होगा, one ray will come parallel to the principal axis, pass to the focus, then ray will go to the optical center और वो दोनों यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप फिर से देख सकते हो, the image is real inverted and diminished, image is real inverted and diminished, okay, then next इसके बाद में क्या होता है, the next case is like this, that this is the lens, then this optical center, then ओके, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सी सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर या 2f1 पर आता है, एग्जैक्टली एट 2f1 पर, तो क्या होगा, one ray will go parallel to the principal axis, it will pass through the focus, then it will pass through the optical center and then the two rays will intersect with each other over here, okay, exactly at 2f2, okay, और real inverted same size की इमेज बनेगी, real inverted and same size की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, ओके, then नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी इमेज बन गई, ओके, देन अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लेकर आए, ओके, तो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लाने के बाद में क्या होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल कम बिटवीन, ओके, इट इज f2 एंड 2f1 एंड f1, यहाँ पर आएगा तो f1 एंड f1, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, one ray will go parallel to the principal axis, it will pass through the focus on the other side, second ray will go to the optical center, okay, and then now what happens, they meet very far, okay, इसलिए क्या होगा, इधर real inverted और enlarged image बन जाएगी, कैसे बनेंगे इमेज, real inverted and enlarged image, okay, then इसके बाद में क्या होता है, the fourth case कम, okay, fourth case में क्या होता है कि we keep the object at focus itself, we keep the object at focus itself, so when you keep the object at focus itself, okay, then what will happen, see ये आपने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, one ray goes parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus, second ray goes through the optical center, and now these two rays will travel parallel to each other and they will never meet, they will never meet, and in this way what will happen, then a real inverted and highly enlarged image will be formed at infinity, okay, then now see एक लास्ट केस होती है, okay, उस लास्ट केस के अंदर क्या होता है, in that last case, okay, we keep the object in between f and o, we keep the object between f and o, तो सपोज ये हमारा लेंस है, ये हमारा फोकस, थोड़ा इसको दूर लेते हैं, ये फोकस है हमारा पहला यहाँ पर, दूसरा ये है आपका 2f1, ये f1, ये o और ये f2, ओके, हमने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया तो one ray will go parallel to the principal axis, it will pass through the focus, second ray will go this way, अगर हमने दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर इमेज बनती है, that image is real inverted and highly enlarged, okay, then real inverted and highly enlarged image will be formed, okay, then next, okay, और इस तरीके से क्या होता है, अब अगर आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहे तो आपको एक बात समझ में आएगी, ओके, देन क्या समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर जो हमने सिचुएशन देखी, तो सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि
जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है तो वो F1 टू F1 और O के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए, अगर हम ऑब्जेक्ट को टू F1 और O के बीच में कहीं भी रख दें तो क्या हो जाएगा, आपकी जो इमेज रहेगी वो इमेज कैसे हो जाएगी, द इमेज विल बी एनलार्ज्ड. ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी, देन इन विच केस द एनलार्ज इमेज इज फॉर्म, इन विच केस द एनलार्ज इमेज इज फॉर्म. ओके, तो वो जो एनलार्ज इमेज होती है दैट इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन this okay, then in the 2F1 and optical center, okay, 2F1 and optical center. Okay, then next इसके बाद क्या होता है, लास्ट केस, तो लास्ट केस में क्या होता है कि we get the virtual erect and enlarged image. Okay, then just a minute बेटा, मुझे बहुत सारे अपडेट भेजने पड़ रहे हैं अभी. I did not think of this. From that. Just a minute बेटा. Just a minute बेटा. I have so many distractions today in the class timing also only. So इस तरीके से क्या होता है कि ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा. Then next thing, okay, see, अभी इसके बाद में क्या आता है हमारा कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस. Okay, कॉन्केव लेंस की केस में दो ही केसेस होते हैं. Then what are the two cases? Then when the object is at infinity. So when the object is at infinity, what will happen? If suppose this is your lens, then here is the optical center, here is F1, here is 2F1. When the object is at infinity, all the rays come parallel to the principal axis, and those rays which come parallel to the principal axis, they strike the lens, and then they diverge as if they are coming from the focus. Okay, in this way what will happen? A virtual erect and point size image will be formed at the focus. अभी आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मतलब कॉन्केव लेंस की केस के अंदर, in case of the concave lens, all U, V and F, all three are negative. U, V, F, all three are negative. Okay, then बाकी जगह पर आपको सोचना पड़ता है कि कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है. Okay, then next case, then the second case is that when the object is between infinity and optical center. So when the object is between infinity and optical center, that time what you will do? Then first take a ray, then this is the optical center over here. Then next, then suppose here is F1, here is 2F1. Then when the object is placed over here, one ray will go parallel to the principal axis. After reflection, it will appear to pass through the focus. Second ray will go through the optical center without any deviation. फिर यहाँ पर object बनता है. So here what happens in all the cases, the image will be a virtual erect and diminished image. A virtual erect and diminished image. Okay, in all the cases the image will be a virtual erect and diminished image. Okay, then next. Okay, then after that what is there? Then power of the lens. What is power of the lens? Then the converging or diverging ability of a lens is called as the power of a lens. The converging or diverging ability, okay, is called as the power of lens. Power of lens. Okay, the converging or diverging ability.
meter. 1 diopter is the power of a lens of focal length 1 meter. ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर इसका पावर निकाल सकते हैं. देन इसके बाद में क्या होता है, इफ यू कीप टू लेंसेज इन कांटेक्ट, if you keep two lenses in contact, then their power get added. So when the two lenses will be placed in contact with each other, then the power of the combination is given by, suppose here the power is P1, here the power is P2, then P is equals to P1 plus P2. Okay, अब actually क्या होता है कि we know that this P is equal to 1 by F, so the focal length of the combination will be equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. Okay, अगर आपको suppose दो lenses दिया है, एक लेंस का focal length है 10 सेंटीमीटर, ओके, दूसरे का फोकल लेंथ है F2 is equal to 20 सेंटीमीटर, और आपको बोला कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ ये फार्मूला से निकलेगा. यू कैन ऐड द पावर डायरेक्टली, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ यूजिंग दिस फार्मूला. ओके, इस तरीके से आपका यहाँ पर फोकल लेंथ आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में और क्या होता है हमारा यहाँ पर, देन क्या आ गया फोकल लेंथ का, ओके, चल यहाँ पर ये पावर का पार्ट खत्म हो गया अभी लेंसेज का. ओके, नाउ अभी मिरर का है. मिरर आप खुद भी कर सकते हो घर पे. ओके, इतना मुश्किल नहीं है मिरर का, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी चीजें पता है. ओके, अब सिर्फ आपको याद रखना है साइन कन्वेंशंस. ओके, जो साइन कन्वेंशंस है वो मिरर और लेंस के लिए अलग अलग रहते हैं. मैं यहाँ पे पहले मिरर के लिखता हूँ और फिर लेंस के लिखता हूँ. अब आपको सिंबल तो पता चल चुका होगा कि यू वी, ओके, एफ, ओके, देन एच, एच डैश, ओके, और एम किस चीज के सिंबल होते हैं. यूज द सिंबल ऑफ, यस एनीबॉडी, यू इज object distance. it is object distance. Okay, it is forever negative, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, forever it is negative. Okay, then उसके बाद में क्या होता है, v, जो v होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो मिरर में, okay, it is negative for real, negative for real image and positive for virtual image. ओके, मिरर की केस में. और लेंस की केस में एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, नेगेटिव फॉर वर्चुअल, सॉरी, पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, ओके, एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज. ओके, सी, सिर्फ इतना ही एक डिफरेंस है, इतना ही एक डिफरेंस है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ, इट इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, ओके, एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव. ओके, सेम इज एप्लीकेबल हियर आल्सो. ओके, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर भी एच डैश पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की तरफ होती है, देन एंड नेगेटिव फॉर रियल. ओके, देन सेम थिंग विल बी फॉलोड हियर आल्सो. ओके, और जो मैग्निफिकेशन होता है, तो मैग्निफिकेशन के केस में क्या आता है कि सेम थिंग, इट इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल. ओके, दोनों भी जगह पर क्या होगा, सेम थिंग विल बी फॉलोड. तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो लेंस और मिरर के लिए अपोजिट होता है. ओके, जो मिरर के केस में रहेगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको लेंस के केस में लेना पड़ता है. ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर साइन कन्वेंशंस का. ओके, अब इसके बाद में क्या है, अब न्यूमेरिकल्स. अब न्यूमेरिकल अभी तो नहीं होने वाले, 10 मिनट में 2 न्यूमेरिकल होंगे, मतलब नहीं है कुछ इसको. ओके, तो न्यूमेरिकल हम एक काम करते हैं, कल 3 बजे लेते हैं. ओके, कल 3 बजे न्यूमेरिकल्स लेते हैं. Okay, then so now actually I got too much of work today because tomorrow morning is examination. Okay, and I was not prepared for that, so we need to stop the class now. Okay,